Assalamu alaikum and welcome back to the Aleph Podcast. आज मेरे साथ हैं the songwriter, vocalist from E Sharp, the band, Ahmed Zawar. How are you? I'm good. How are you? Good, good. And Thank you good for to having have me. you. No, most welcome. And कम ही bands हैं जिन्होंने इतना मतलब original काम निकाला है in the last 10-15 years. Yeah. And you guys are definitely up there with that. So, but how's it going? यार गोइंग गुड. एक मैंने जब आपने बोला कम ही बैंड्स हैं हाँ. तो मैंने कहा दैट्स द परफेक्ट स्टेटमेंट कि कम ही बैंड्स हैं. पाकिस्तान में कम ही बस बैंड्स कम ही हैं. आजकल तो वैसे ही बैंड्स का जो है वो हाँ. इट्स गॉन आउट ऑफ फैशन. बट या इट्स बीन गोइंग गुड. You know, it's been a while since I've been doing music. और सारे musicians के लिए वो accidental तरीके से start होता है, but then you sort of realize that okay, this is something that you can do longer term. तो अच्छा एक पूरा evolutionary process रहा है in which you know I've grown as a person और साथ साथ music भी उसी तरीके से. Band is a part of it, but of course there are other things as well. Yeah. So it's been going good, yeah. So yeah, why don't we start from वही शुरुआत की बात के मतलब what inspired you initially to pick up a guitar or start singing and stuff? I think it was the band culture back in 2004, 2003, जब वो नूरी EP वाला time था. Yeah. I think that was one time when a lot of young people were getting into this whole idea of making their own songs. और यहीं से हमें भी शौक चढ़ा था. और मुझे लगता है कि एक pivotal moment जितना भी उस ज़माने में अनकूल आप कहते थे यार मैं आतिफ असलम को जो सुनता है वो अनकूल है या जो मिज़राब को सुनता है वो ज़रा कूल है. बट द पॉइंट इज़ दैट लाइक आई सेड द पिवटल पॉइंट वाज सॉन्ग्स लाइक आदत फॉर एग्जांपल. ठीक है कि जब वो आए और मतलब व्हेन दे बर्स्ट इनटू द सीन we didn't realize back then it sort of gave a lot of people that self-belief कि okay, this sounds something that even I can write about. And that doesn't mean कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ है कि मैं लिख सकता हूँ, but there's something about it was very simple lyrics and simple composition. Yeah, और I think वो आप गिटार भी जब पहली दफ़ा पकड़ रहे थे it's almost become a meme कि वो बस आदत पे लगा बजाना आता है. मैं आज तक भी कभी कभार जो है ना वो आदत का सोलो बजा के सुना देता हूँ. but I think that instilled that belief. Yeah. और वैसे musically I think I was always into it as you would say. वो स्कूल में जब आप कोई ना कोई बच्चे चाहिए होते हैं 14th अगस्त के फंक्शन में गाना गाने के लिए तो उनमें मैं होता था. But I think I started listening to Western classical rock pop very early. Like I think the first mixtape, like a cassette that I had was of The Doors. So and that was because of my brother and cousins and they were listening to that kind of stuff. तो मेरा वो वाला introduction काफ़ी हो गया था. और also उसमें भी even like मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हूँ वो Beatles का fan हूँ और मैंने इतना सुना उसको. और even with Beatles की music भी it was more about the simplicity of the music. Because आप जब your introduction to music in Pakistan would be the classical types. Ramidi Hassan साहब या आपके घर में जो चीज़ें सुनी जाती थी और आपको वो सुन के ही लगता था कि ये आप कभी भी नहीं कर सकते because it sounded so hard. Advanced, right? And with no intention of disrespect, it was just like this is something that I will maybe have to learn a lot. और वो culture नहीं है हमारे यहाँ ना वो learn करने का and everything. So I think this sort of Western pop rock style of songwriting that got me into it. कि जब मैंने अपने गाने खुद से लिखना शुरू किया and that got me really excited. और फिर वो band एक with my school friends and turned out that one of the people that I met through a school friend of mine was Anwar. And that was back in 2005. So it's been what 18 years. 18 साल से वो उस वक्त band बना और फिर वो चलता रहा. But the good thing is that it never stopped for us. So even initially the idea is to get famous and do world tours and all of that. But the good thing is that even हमारी जिंदगियों में बहुत सारी चीज़ें और चलती रहीं but हमारी music चलती रही. So we evolved together as people, also as friends, and then also as musicians. And particularly me, Anwar, and then later on Kambar. तो हम तीनों ने आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा, जिस ज़माने में बिल्कुल हालात ख़राब हो गए थे तो कोई शोज़ नहीं होते थे, तो हम भी कोई शोज़ नहीं करते थे. फिर जब कोविड आया तो हमने भी इसी तरीके से अडैप्ट किया. सो इट्स लाइक we've evolved with this. Yeah. I mean, tell us about as far as E Sharp goes, like
एक तो नाम कहाँ से है, दूसरा के मतलब was there any kind of decision or collective thought कि ये certain kind of music हमने बनाना है, या फिर जो भी मतलब निकला वही बनाया? नाम का आई हैव नो आइडिया यार. मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो ये जो थ्योरी होती है म्यूजिक की, ABCDE, उसमें शार्प नहीं होता है. तो मैंने फिर एक रेट्रोस्पेक्टिवली स्टोरी बना ली कि E sharp doesn't exist. We're so unique or whatever. But I don't have any idea. I think it's my friend Imran actually. Yeah. जिसने बैंड ये शुरू किया था, उसने ये नाम रखा था. म्यूजिक का कभी ऐसा हमने सोचा नहीं. I think it stemmed a lot because I was initially the only songwriter in the band. तो it actually stemmed a lot from what I was doing. मेरे अपने क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, मैं क्या म्यूजिक सुन रहा था, मैं किस तरीके के गाने बना रहा था. बिकॉज उस वक्त 15-16 साल की उम्र में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता सब में कि यार वो गाने हम लिख लें या कोई इस तरह की चीज़ करें. मेरे अंदर एक वो था बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाय अ लॉट ऑफ लाइक आई सेड, लाइक आई मेंशन्ड. तो मुझे अभी बिल्कुल मदर्स डे पे मैंने अपनी अम्मी को कोई 15 साल पुराना एक मुझे रिकॉर्डिंग मिली और मैंने उनको भेजा. एक that was the first song that we recorded, was called Ma. We never released it. But the point is that at that point of time, there were certain emotions that I was feeling about. It was all about writing about your emotions. Yeah. तो वो एक चल रहा था. फिर जिस तरह बड़े होते गए उस तरह with heartbreaks and all of that, so the music sort of. Were you always like even growing up before making songs, did you always write? Did that come naturally to you? Yeah, particularly, I don't know about songs, but creative writing was something that I would always do in my spare time. मतलब मैं अपनी stories कुछ ना कुछ बना रहा होता था. I don't know, I had this whole cricket team जो मेरी अपने सारे players होते थे उसमें. शीशे के सामने मैं खेलता था, World Cup matches हो रहे होते थे. Nice. I'm just trying to think about कि कहाँ से ये सारी चीजें आ रही हैं. So there was because writing is quite challenging for many people. वो music बनाना होता है, फिर उस वक्त आप सोचते हैं अच्छा इसके लिरिक्स किसी तरह बन जाएं. True. बट जिसका पहले से कोई एक्सपीरियंस हो उसके लिए नेचुरल होता है. True. But I think what worked in my favor was कि मतलब आप अपनी एज के हिसाब से बड़ी अब मैं सोचूं कि मैं 15 साल की उम्र में क्या लिख रहा था तो मुझे बड़ी स्टूपिड लगेंगी. But the good thing is that the people around me, they always were mature enough or smart enough to understand that this is coming from a 15-year-old who doesn't have any sort of prior knowledge of it. So वो एक होता है ना कि मैं कभी भी उस तरीके से डिस्करेज नहीं हुआ. आई वॉज ऑलवेज इनकरेज्ड बाय माई फैमिली, बाय माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन. और वो म्यूजिक से तरह होता भी है कि आप एकदम से बैंड में आ जाते हैं तो वो हर कोई बोलता है अरे यार जबरदस्त बड़ा तुम रॉक स्टार बन गए व्हाटएवर. सो दैट आल्सो सॉर्ट ऑफ वो मतलब आई थिंक देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि पाकिस्तान में बड़ा डिस्करेज लोग करते हैं. मैं तो ऑपोजिट देखा है हमेशा, स्पेशली इन द अर्बन सेंटर्स. दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली कि मतलब actually let's go a little deeper into that. I mean, what do you think is behind this misconception? Because एक तरफ लोग बड़ा impress होते हैं आप कुछ गा दें, आप बताएं कि मैं बजाता हूँ तो हमारे लिए भी बजाएं, हमारे लिए. दूसरी तरफ societal level पे it's apparently not so encouraged. मुझे लगता है like you said also, like maybe it's some misconception because even societal level, what is a society? It's just families and people coming together. उनके क्या culture and क्या norms. I think music is very much appreciated. हमारी शादियों में music बजता है, हमारी political gatherings में, हमारी जो religious gatherings सारी में एक music plays a very important part. और ख़ानदान में जिसकी आवाज़ अच्छी होती है या जिसको कोई एक्टिंग मिमिक्री करनी आती है उसको हमेशा आगे किया जाता है मेरे ख्याल से. जितना हो सकता है कि आई मे बी स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव सो आई डोंट नो बट आई थिंक दैट्स फेयरली ट्रू इन जनरल. या बट आई थिंक वो जो एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट जो बना है वो इट्स बिकॉज ऑफ द कंट्री कलेक्टिवली नॉट हैविंग सॉर्ट ऑफ लाइक an identity when it comes to art. मतलब इतनी accepted नहीं है, maybe we have it. But जिस तरीके से for example India की like when you meet an Indian, when a Gora meets an Indian, sorry if I can use this word. So when somebody meets an Indian, they are reminded of Bollywood, of Shah Rukh Khan or whoever. But if somebody meets a Pakistani, they get overshadowed by the subcontinent or तो maybe शायद ये कंसेप्शन यहाँ से डेवलप हो गया कि हमारे यहाँ इतना इनकरेज नहीं है बिकॉज देयर इज नो लाइक आई सेड अ कलेक्टिव एफर्ट. या आई मीन बट वी आर एट हार्ट आई थिंक
मतलब कॉम में क्रिएटिविटी बड़ी है, यू नो, मतलब आप अब टिकटॉक खोल लें, हर एक पार्क्स में जाएं और हर एक टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं और कुछ मतलब चीज़ें कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल यू नो क्रिएटिव ही तो है, मतलब कुछ सोच के कर रहे हैं, बट यू नो फॉर सम रीज़न there doesn't seem to be any kind of like organized effort to you know support it or to build any institutions around it. True. And matlab, how is that? It must have been quite challenging for you all over all these years to keep your band going. Yeah. In the face of all that, कभी shows हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, और फिर बाकी bandmates भी कभी frustrate हो जाते हैं, सबको साथ लेके जाना होता है. True. तो how has it been? I mean, have there been points where you guys have considered that it's pointless, or it's just something that gives you enough, you know, for yourself कि आप बस अपने लिए कर रहे हैं? I think logically speaking, it's always been pointless. Yeah. मतलब अगर आप 2/2 करने के मूड में हैं तो pointless तो है, because इंडस्ट्री नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल whatever. But I think जो सारे आर्टिस्ट लोग होते हैं वो थोड़े जुनूनी किस्म के लोग होते हैं. They're more driven by their faith towards it. So I think that plays an important part. Even in the band there have been a lot of instances कि जब हम बैठे हैं और हमने कहा कि यार नहीं हो रहा ये. Like for example, I remember when 2020 में या उससे पहले शायद एक बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी जब कराची में, एंड वो मेरे ख्याल से तुम्हारे स्टूडियो में भी उस पर कुछ हुआ. I don't know, our studio got like really screwed. Ours was okay, but almost everyone we know. Yeah. तो उस वक्त like I remember standing outside with the boys, वो सब कुछ डूबा हुआ था और हम कह रहे थे कि यार do we reconstruct it or what, मतलब what is even the point, मतलब. बट आई थिंक वही वाली बात है कि जिस तरह मोहब्बत प्यार इश्क में जो है वो लॉजिक नहीं देखी जाती, तो इसमें भी, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ड्राइव्स अस एंड वी शुड स्टिक टू इट, कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग then we should do it despite the odds, and I think the odds coming in is an indicator that you know you are passionate about it. नहीं तो सारी चीज़ें अगर आसानी से हो रही हैं तो फिर उसमें मज़ा नहीं है. और I particularly feel के like when we were speaking of this whole like कि क्यों societal और ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे लगता है कि generally लोगों हमारे society में passion और you know loving something to an extent that you work for it, इसको कुछ inherently discourage किया जाता है. I think it's the mood of the people कि अगर वो कुछ अलग से हटके करने की कोशिश कर रहा होता है किसी चीज़ के लिए तो I mean उसमें I think थोड़ा सा जो मुझे महसूस होता है वो ये भी होता है कि मतलब क्योंकि everyone has something जो दिल से at some point वो करना चाहते हैं और उनके साथ वो चीज़ रहती है until they actually do it. तो when because most people don't have the courage to follow their heart, and they're following society or what is expected of them. तो जब कोई ऐसा नजर आता है जो कर रहा है तो वो अंदर से एक वो ईगो आता है ना कि ये क्यों कर रहा है, यू नो, इसको भी हटाओ, मतलब अपने आप trying to cut them down to your level, you know, because you feel threatened कि this person आगे निकल रहा है. But at the same time there are people जो कि दिल में लेके बैठे होते हैं, जब उनको ऐसा बंदा देखता है तो वो उस तरीके से इनकरेज भी फिर करते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में जो वो नहीं कर पाते होते हैं, and they want to see it through another person. And that's something that I also जब for example you've been on stage, when you're performing on stage, I think when you're looking at the audience, I think उनकी आंखों में कभी बार आपको दिख जाता है that they aspire to have that sort of confidence के not just कि किसी को stage पे आना है but whatever they're doing in life, to do it with that level. Like one thing that I say to a lot of people, that never be shy of being the first person who speaks in a boardroom, for example. मतलब इतना ज़्यादा corporate लोगों से मुलाकात होती है, मैंने खुद भी इतना काम किया है. कभी कभार आप एक boardroom में बैठे हुए होते हैं, मीटिंग चल रही होती है और सब चुप होते हैं, कोई एक बॉस टाइप बैठा डर के मारे सब बैठे, पता नहीं क्यों है ऐसा मसला है. और जो पहला बंदा बोलता है, जैसे मेरे अंदर तो कीड़ा है कि मैं बोल देता हूँ, मेरे दिल में जो आ रहा है मैंने बोल दिया, तो मुझे लगता है कि यार उससे बड़ी अच्छी ज़बरदस्त माहौल भी एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाता है, आइस मेल्ट हो जाती है, लोग और इनकरेज हो जाते हैं. बस वो एक पहला कदम किसी को लेना. हाँ, जिससे मुझे एक वाकया याद आ रहा है, but मतलब sometimes it can have the opposite effect, I think, but like, you know, but that's okay, and that's you know, that's the disclaimer that I gave, that 7 out of 10 times maybe it's not gonna work, but 3 दफा वो जब चलेगा ना तो वो memorable होगा.
Like I remember, I don't know, were you there जब Spotify Yeah. When you- मैंने सब चुप बैठे हैं, मैं शुरू हो गया. अच्छा, मैंने सवाल पहला मैंने पूछा था, लेकिन मैंने थोड़ा सेफ सवाल पूछा था. मैंने कहा सेफ्टी का टाइम नहीं है, सब निकालो. It's something that you believe. उसके बाद उन्होंने कभी मेरा गाना प्लेलिस्ट में नहीं डाला. ना वो आपको repercussions होते हैं. But I'm glad that you stuck to it. That you're not scared. Eventually इतने डालेंगे कि चॉइस नहीं रहेंगी. और नहीं, तुम्हें खुद भी फील होता होगा जिस तरह तुमने अगर वो सवाल पूछा, तो तुम्हें एक अपनी कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो कोई चीज होती है. नहीं, बिल्कुल. बाहर मैं निकला और ऑब्वियसली सब म्यूजिशियंस आर्टिस्ट आए थे, एक एक करके सब मुझे आके तुमने बड़ा सही सवाल पूछा. अच्छा, वो सवाल क्या था कि पता नहीं जो लोग देख रहे हैं शायद वो this is actually, we can talk about it. I mean, it was, I think, दो सवाल थे. एक तो ये था कि Spotify का जो सिस्टम है कि आप फॉर इंस्टेंस आपने एल्बम बनाई है, एंड हैविंग मेड एल्बम्स यू कैन रिलेट टू दिस. अब आपने एल्बम बनाई है, वो एक वक्त में ही पूरी इसकी प्रोडक्शन आप खत्म कर रहे हैं, राइट, और वो एल्बम एज एन एल्बम तैयार हो रही है, राइट. अब Spotify में आप वो सबमिट कर रहे हैं फॉर रिलीज, और उसमें वो आपको सिर्फ उसमें से एक गाना सिलेक्ट करने देता है प्लेलिस्ट कंसिडरेशन के लिए. ओके, एट वन टाइम. इफ यू आर uploading an album as an album, then you will only get to submit one song. Okay. So this has happened with us. We produced, Malang Party की album, उसमें से गाने तो बहुत थे पोटेंशियल वाले. जो गाना हमने सबमिट किया उसके आज 50,000 प्लेज हो गए, बाकी एल्बम के 1,000 पे बैठे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकली ऑल्सो बैक इन द 60s when there was no digital streaming and all, there was always this importance given to a couple of singles when they were released. Right, but the difference was if you liked a single, you went and bought the album. Yeah. Right? So you didn't have a choice. There was nowhere else you could just stream. But the singles also used to come in separate LPs as well. ये भी होता है. That is true. Yeah. That is true. But अब ये हो गया है कि वो आपका सिंगल एक प्लेलिस्ट में है. प्लेलिस्ट में लोग सुन रहे हैं क्योंकि वो लेजी हैं, उन्होंने ढूंढना नहीं है, बस प्लेलिस्ट को प्ले करना है. उधर आपके प्लेज रैक अप हो रहे हैं. अब उनमें से कुछ जो है वो क्यूरियस होंगे, वो आपकी एल्बम जाके सुनेंगे, बट ज्यादातर एफर्ट नहीं करेंगे. व्हाट दिस इज डूइंग इज फोर्सिंग यू टू release music as singles, एक एक करके, which has become the norm now, and that has become the norm. Now क्या कहते हैं, what songs are pushed and what kind of genres are pushed also seems to be following a certain trend, right? And then artists are sort of they're forced into कि अगर गाने तो वो कौन सा एक गाना ऐसा बनाए जो उनके हिसाब से हो, और फिर exactly. That's not necessarily, मतलब by definition you could almost say it's not pushing the art forward. Yeah, right. You're going to the safe options जो आपको पता है कि ये लोग ऑलरेडी ये सुन रहे हैं. Absolutely. तो वो नई चीज पैसे कैसे सुनेंगे? True. तो दूसरा मेरा उस पे ये था इख्तिलाफ कि इसका तो उनका पास कोई जवाब नहीं कि I mean I asked whether they're considering allowing multiple songs from an album and like we don't know, whatever, they गोल कर दी बात. और दूसरा ये था कि why is it that certain genres of music seem to be more promoted by Spotify. Like अगर मैंने रॉक की एल्बम की है तो वो कहीं नहीं उनकी प्रमोशन में आने वाली, क्योंकि they've decided कि लोग आजकल, and their reasoning which is converse I feel, कि लोग आजकल सुन नहीं रहे. But you're the ones that are your algorithms are defining what people are listening to. If आपके फ्रंट पेज पे रॉक आना शुरू हो जाए तो वो लोग क्यों नहीं सुनेंगे? So that's they have a power. Argument also ना कि लोगों को जो आप देंगे they will at least give it a try. Absolutely. So on this they also kind of denied कि no ऐसा नहीं है. अभी they are also figuring out themselves, I would say. Give it to them because it's also new. I think Spotify का it's been like 2 years since it has really become the kingmaker. Right, but like again my wider point was कि as a music producer, if I have produced 5 albums in a year, but that's like maybe
50 songs or 60 songs or something. और उसमें से मेरा सिर्फ एक गाना फीचर हो रहा है, तो जनरल ऑडियंस के लिए तो मैंने 5 गाने बनाए, बट समवन एल्स दैट इज जस्ट डूइंग 10 songs in the year, उसके 10 के 10 प्लेलिस्ट में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो यार ये तो कितना काम कर रहा है. असल में ये बंदा उससे 6-7 गुना ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन उसकी दिखा रहे हैं आप आधे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस. But I think the kind of feedback, I think it's nothing wrong for them to take it in, because and I mean, think it's going to only work in favor of their hopefully but खैर Spotify से बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं. क्या कहते हैं, so as far as you've seen many kind of eras in this industry, where do you see, I mean, the main challenges, like as a band, obviously one of the major challenges, and the reason कि मैंने ये studio बनाया भी, कि first finding a quality place, producer, studio to record at. मतलब in the early days, how did you get over that hurdle? Basically majburi. So we learned it ourselves. We ended up, we did go, like I remember going to Umran Shafiq back in 2014. And back then we didn't also know a lot about production, but the idea was कि यार how can we make our sounds better. But even बेचारे उमरान भाई भी एक छोटे से कमरे में ही मजबूरी में ही वो भी कर रहे थे, और उनका असल पैशन कुछ और होगा, वो हमारे साथ मतलब वो ये ना कि एक आपको एक सिस्टमैटिक वो चीज़ तो नहीं दिखती, you know. And then we worked with him, for example, we were अच्छे से ये हमें साउंड ऐसे ऐसे समझ में आने लगा कि अपना साउंड कैसा है. फिर उस पर for example Anwar has now spent a lot of years sort of constantly learning, and I see him as a person also, that मतलब मैं अगर कभी स्टूडियो अपने चले भी जाऊँ तो वो यूट्यूब पे बैठ के कुछ देख रहा होता है और कुछ सारी चीज़ें. So I think what has helped overall, like over the years, is that production has also sort of, because of technology, it's become more accessible. It has become more accessible. So imagine being there in the 80s, for example, in the 90s. तो उस वक्त तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आपको कि बड़ा स्टूडियो ही करना होता था. It was real machine तो सिर्फ उनके पास ही. But exactly. But I think production is one thing that मुझे लगता है कि वो बैक एंड पे चला जाता है, although it is the most important thing. And मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं थोड़ा लेमैन की तरह देखता हूँ, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ when it comes to music. तो मुझे अभी भी फील होता है जब मैं पाकिस्तानी गाने सुनता हूँ और जब मैं बाहर के गाने सुनता हूँ, तो मुझे I can't explain it, but I feel that there is something that the production here lacks. I don't know. Definitely. तो especially अगर आप mass consumption वाली चीज़ों को देखें, you know, because most of the mass consumption गाने जो यहाँ से निकल रहे हैं आजकल, वो kind of DIY process से हो रहे हैं. Even though काफ़ी बेहतर मिक्स इंजीनियर like अदील ताहिर काफ़ी काम कर रहा है, बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं, जो लोग पहले घर में कर रहे थे वो शायद अब उसको भेज रहे हैं या किसी और को भेज रहे हैं, but still there's a long way to go, I believe. और मतलब maybe we're on the right path कि हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर हो जाए. I don't know, like मतलब I think so. I see that. मतलब you know, ये स्टूडियो भी for example अब 5 साल से है और inquiries over the years बढ़ी हैं, you know. वो अलग बात है कि the amount of people who want to make music versus the amount that can afford or valued enough to save enough money to pay you a reasonable amount जो आपका बनता है, वो अभी गैप वो तो है. तो आप लोगों ने भी फनकारपुर as a studio and production house शुरू किया. How long has that been? I think it's been 5 years now. We started back in 2018, and the idea, I think the first idea for a Pakistani musician is always to have their own space for themselves first. क्योंकि पहले तो हमने तो अपनी इन्फेंसी में या फिर जब हम बैंड गिग्स वगैरह भी कर रहे थे, we were jamming at किसी के दोस्त के घर या फिर वो, और फिर जाहिर है कि वो कंफर्ट लेवल और वो सारी चीज़ें नहीं होती. So this was one thing that was always on the cards, that we needed to have our own space. But another thing that happened was that so basically मेरा background in education is of law. So I used to practice law for a good 3-4 years. But I shifted to advertising back in 2017. मुझे लगा कि यार किसी ऐसी फील्ड में होना चाहिए कमाने वाली. अगर आप कमा रहे हैं तो जो थोड़ा आपको क्रिएटिव
चैलेंज करे या कुछ है, क्योंकि फिर फायदा नहीं है, बट देन यू गोना लीड टू लाइव्स एंड यू गोना एंड अप सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स बीन अ चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो व्हेन आई गॉट इनटू एडवर्टाइजिंग, वन थिंग दैट आई रियलाइज कि पाकिस्तान में अगर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है क्रिएटिव, लेकिन एड इंडस्ट्री है. और ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि क्यों है वो, मतलब why is there a vibrant ad industry with millions and millions of rupees that is being invested, and it is technically a creative industry. There is storytelling, there is script writing, there is screenplay, there is a director involved, production, AD, music, and all of that. We can discuss on that also, but that's something that I realized that that's not a bad sort of income stream for creative people. मतलब अगर कोई लिखता अच्छा है तो वो ad लिखने लगे अच्छे. अगर जिस for example I thought that we could make when I started working, मुझे realize हुआ कि तो मुझे अपनी creativity dumb down करनी पड़ी है. मैं तो बड़ा डीप लेयर्ड और मैं सोचता हूँ अपनी काम के बारे में. यहाँ तो मुझे बोला यार 4 दिन में आपने ये चीज़ देनी है, तो ऑटोमेटिकली मुझे बोलना पड़ेगा नो, आई एम नॉट गोना गिव माई बेस्ट वर्क, आई एम गोना गिव माई 4th बेस्ट वर्क, बिकॉज दैट्स द टाइम. खैर, द पॉइंट इज दैट आई रियलाइज दैट देयर वाज स्पेस टू अर्न income for the band in making music for ads, and now that also I was connected with the ad industry. So then we decided, okay, I pushed the boys and I said that start करते हैं स्टूडियो. वी हैव बेसिक इक्विपमेंट है हमारे पास, इसको अपग्रेड करते रहेंगे. अभी ये थोड़ा काम यहाँ से आएगा, थोड़ी अपनी जगह हो जाएगी, एंड देन द प्राइमरी फोकस विच इवेंचुअली शुड कम आउट इज टू produce independent music for younger artists, because they have nowhere. And this is not coming out from any philanthropic point of view कि यार कुछ वापस देना है सोसाइटी को, बट इट्स जस्ट वेरी नेचुरल कि यार हमें पसंद तो यही चीज़ है ना. कितने ऐड बना लेंगे, कितनी जिंगल बना लेंगे, कितना कर लेंगे. एट द एंड मजा तो ऐसी चीज़ में है कि यार कोई बैंड आए या कोई आर्टिस्ट आए, उसका अपना एक गाना जिसने अपने कमरे में लिखा है किसी चीज़ के बारे में, एंड यू कैन ट्रांसलेट दैट इनटू अ सॉन्ग, लाइक अ प्रोड्यूस सॉन्ग. So that became the route, and the good thing is that with the ad music and everything, the studio kept running. Uske bills वगैरह. And then we got into of course started putting up on our social media pages कि यार, I remember one of the posts that I put up was कि 15,000 रुपए में आपका गाना रिकॉर्ड कर देंगे. एंड मुझे आइडिया, मैंने कुछ भी सोच के नहीं लिखा था वो. मैंने सिर्फ ये सोच के लिखा था यार मुझे क्या पता 20 लोग आए, उनमें 2 मुझे कोई जबरदस्त अच्छे म्यूजिशियंस मिल जाएं जिनके साथ मैं एक लॉन्ग टर्म हम लोग एक लॉन्ग टर्म बना सकें रिलेशन. एंड दैट हैपेंड. आई थिंक वन ऑफ द बैंड्स दैट यू आल्सो नो, पकड़ दकड़, बिल्कुल जबरदस्त म्यूजिशियन. Yeah, and they came to us because of the fact that we were offering a 15,000 deal, and but the fact is that they were one of those artists from a larger pool, and there are also other artists like for example Ahmed Zawar है. तो इन्होंने पकड़ दकड़ के साथ जिस तरह हमने काम किया, मैं कहता हूँ ये हमारी एक तरीके से जो हमारी एक गोल थी स्टूडियो की, कि यार बिल्कुल रॉ, जिसको कुछ भी नहीं पता लेकिन उसको बस म्यूजिक बजानी आती है और उसको गाना लिखना आता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कि क्या हम उसको वो साउंड क्वालिटी दे सकते हैं. Can we try it? Can we try to connect them with the right people? Can we try to get them? Because we then eventually started opening up our studio into multiple categories. So, for example, Kambar has always been very excited कि कोई एक live एवेन्यू होना चाहिए आपके स्टूडियो का. मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ग्लोबली स्टूडियो काम करते होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि है नहीं इस तरह से चीज़ें, तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, एक अगर हम अपने आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उसको लाइव शो भी बजवाना चाहिए. तो फिर हमने वी स्टार्टेड डूइंग गिग्स, एंड आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कम्बर फॉर दिस, कि उसने वो आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस दिया. दे स्टार्टेड हैविंग देयर ओन फैन फॉलोइंग, और फिर यही है, द आइडिया यही है कि इस तरह के इट्स बेसिकली डूइंग लाइक the labels work, no? Proper label without any capital. Exactly. I mean, be the A&R guy, be the producer, be the promoter, be everything, be the engineer, and it's similar with us, because we realized कि मतलब at the end of the day अगर shows अपने रॉक जानरा में कराने हैं, और मतलब बैंड्स हम उस तरह के ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने बीट पे बनाना है म्यूजिक तो 10 और लोग हैं, 50 और लोग हैं. यहाँ हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, कोई फायदा नहीं. यहाँ तो वही आएंगे जिनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चाहते हैं. सही बात. तो अगर उनकी ग्रोथ चाहिए, उनके लिए कुछ एवेन्यूज चाहिए, तो साथ में उनके शोज भी कराने पड़ेंगे.
और might as well be publishing them ourselves. You know, फिर किसी और को देने का फायदा नहीं है. Yeah, but I think वही बात है कि even with you or with us, it's more like passion is driving us. Absolutely. तो it depends a lot on how. वही बात है कि मुल्क हालात कैसे सोसाइटी के चल रहे हैं, कितना लोग demoralized जब हो जाते हैं तो फिर वो नहीं करते passionate काम, for example. ठीक है. But okay, let me ask you this, like as someone who has had the opportunity to pursue your passion, you know, what effect do you think it has on your emotional growth, your mental health and things like this? This is not things people generally think about or talk, but having experienced it, मुझे तो लगता है कि अगर आप अपने passion को बंद करके रखें तो it can have a very negative effect on, you know, emotions and mental state, especially for a creative person. Yeah. Or this has been one of my, like, not one of my, I think it's my top fear since a very long time, and it's still with me. If not this, then what? Yeah. एक होता है ना कि और वो मतलब आप हर एंगल से उस बात को समझ, आपने 15 साल लगाए हुए हैं, या दिस इज समथिंग दैट यू नो दैट इज ड्राइविंग यू. लाइक इफ आई लुक बैक इन द लास्ट 15 years of my life, 95% of my life decisions have been dictated by my love for music. सही है. तो मैंने अपनी जिंदगी को शेप किया है. अब वही होता है कि वही जो तुमने बात की कि अगर ये नहीं होगा या बक्से में बंद हो जाएगा तो फिर तो आप मेंटली काफ़ी इफेक्ट हो आप पे आ सकते हैं. और आता है कि जब वो पीरियड्स बीच में होते हैं कि जब आपसे कोई गाना भी नहीं लिखा जा रहा होता, और व्हेन यू गेट मे बी टू बिजी विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ. बट द गुड थिंग इज कि मैं अपने आप को आई कीप पुशिंग माई सेल्फ टू ऑलवेज रिमेंबर वेयर आई हैव कम फ्रॉम. मतलब अगर फर्ज करो कि मुझे इस वक्त कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, एप्पल या अमेजोन, आई डोंट नो, बिल्कुल सही है, और वो वहाँ पे मुझे मिल गूगल, सही है, मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल जाए और सब हो जाए तो और मैं अपनी एक लाइफ स्टोरी भी जोड़ लूंगा कि यार यू नो आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच एंड नाउ आई एम हियर एंड दिस इज माय जर्नी. But then I can get lost into it because then I'll have the money, then I'll have everything that people aspire to have. Right? But अगर वो मेरा बेसिक जो मेरा ट्रिगर था वही मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं फिर उसमें भी फेल हो जाऊंगा. That's my मेरा बिलीफ सिस्टम तो ये कहता है. मे बी लोग सक्सेसफुल हो जाएं लेकिन मुझे लगता है अंदर से तो वो खोखले हो जाते हैं. तो इसलिए मैं अपने आप को आई एम वेरी कोग्निसेंट ऑफ द फैक्ट एंड आई एम वेरी, मैं सेल्फ अवेयरनेस मेरी इसमें बहुत होती है कि यार even if I start achieving a lot of things in life and you know things that we dreamed of as you know when we were kids, but I should never be happy or satisfied कि यार ये मुझे सारी materialistic चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि मैं तो पैशन इसलिए परस्यू करता था बिकॉज ये मैटर ही नहीं करता था. तो वो आप अपने बिलीफ सिस्टम को दिल से करीब मैं तो अपने रखता हूँ. बिल्कुल सही बात. So you had mentioned you know about working in एडवर्टाइजिंग के मतलब अगर पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री होती it might look like the ad industry. Yeah, that's my fear. A lot of people say that you know we don't have an industry, but हमने इंडस्ट्री बनाने में जो सबसे बड़ा fear factor है वो ये है कि you know you just become a factory of and art doesn't work that way. It doesn't. Like we were discussing, the point in discussion was our ads. Yeah. कि वो कितने बुरे हैं और लेकिन आई डोंट नो इफ यू नो करोड़ों रुपए लगते हैं और लग रहे हैं एंड दे डोंट केयर. बिल्कुल. कि अगर वो बुरे हैं. बिल्कुल. बट द पॉइंट इज दैट सिंस आई वर्कड इन द इंडस्ट्री आई नो इट्स बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पेशेंस और रिस्पेक्ट फॉर क्रिएटिविटी. इट्स जस्ट दैट ओके हियर इज अ फॉर्मूला, दिस हैज बीन वर्किंग. रैप म्यूजिक बहुत चल रहा है पाकिस्तान में, तो अब हर गाने में आपने हर एड में आप रैप डाल दें. अब तुलसी शाही जुबारी रैप कर रहा है अगर एड, तो मतलब वो अजीब ही लग रहा है ना कि हर की अपनी आइडेंटिटी होती है. तो इट्स अ लॉट ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग एंड देन लाइक आई सेड दैट there is not a lot of thought process in a lot and what constitutes as ke it's successful chal raha hai? Nothing. I think ads are an excuse for people to travel to Turkey, Thailand for their shoots. पाकिस्तान में तो शूट करते ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी exactly. This is actually the crux of the issue, I feel. कि मतलब पैसे because अच्छा for example ब्रांड एक्स है और उसके वैसे ही इतनी करोड़ों की सेल्स हैं और उन्होंने उसका एक प्रोपोर्शन एड बजट में मार्केटिंग बजट में करार किया हुआ है.
तो इतना तो स्पेंड होना ही है, है। तो फिर वो किसी तरह भी स्पेंड हो, लोगों के मजे हो, और मतलब एंड में क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो उसने तो चलना ही है, आप ऐड करो या नहीं करो. And you can never have a causal link that how many sales were translated because people watched that ad. मतलब it is not possible. And is that a metric that they even look to? No, that's a metric that they keep telling creative people. Right. You need to make something that translates into selling of more of the product, but that is not humanly possible कि आप उसको कैसे connect करेंगे, you know. होते हैं अच्छे एड्स भी होते हैं, दैट्स वेयर के जब इवन फ्रॉम ब्रांड टीम्स देयर इज अ थॉट प्रोसेस कि नहीं वी शुड मेक अ स्टेटमेंट और डू अ नाइस फिल्म, और यू नो अगर आप ग्लोबली इस वक्त एड्स देखें तो उसमें बहुत दफ़ा प्रोडक्ट मेंशन भी नहीं होता. इट्स मोर अबाउट, अगर मैं स्ट्रिक्टली इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस टर्म्स में बात करूं कि आपकी गुडविल इमेज बिल्डिंग के लिए होनी चाहिए रादर देन फ्रॉम सेलिंग योर प्रोडक्ट, बिकॉज दैट्स द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दैट दे हैव. राइट. आई मीन लाइक अब जैसे मैं अक्सर ये दोस्तों के साथ ये बात होती है, लाइक यू नो विद आई वॉच क्रिकेट, यू नो लाइक अ लॉट ऑफ अस डू, एंड ओवर द इयर्स you know everyone who watches cricket would have noticed पाकिस्तान में कि पहले तो जैसे ही ओवर खत्म होता है बस ऐड में आना है, अब वो लास्ट बॉल भी खा जाता है, फर्स्ट बॉल भी अगले ओवर की खा जाता है, चला कि वो नो बॉल थी और वो मैच चेंज हो चुका है. और दूसरी अनोइंग बात इसमें ये मतलब मैच की वॉल्यूम यहाँ जा रही है, ऐड की वॉल्यूम एकदम था, मतलब आप म्यूट बटन दबाओ. तो इन मेनी वेज आई फील दैट इज क्रिएटिंग ब्रांड लाइक नेगेटिव गुडविल. मतलब आप मैच देख रहे हो, बीच में बस इसी मतलब ब्रांड का बस बार बार मैंने कहा भाई इसका तो मैंने कभी लेना ही नहीं. हम जैसे लोग हैं वो करने ही हम लोग क्या हर चीज को ना जहाँ पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आ जाए ना वहाँ पे फिर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते. मैं तुमने कराची में देखा होगा, दे स्टार्टेड दिस न्यू बस सर्विस, देयर इज दिस रेड बस, लंदन वाली बसेस उन्होंने उठाई, उस पे जो एड लगा रहे हैं ब्रांड्स फॉर, अब उन्होंने ना रेड बस निकाली है जो सबके लिए, पिंक बस इज फॉर विमेन, बट उस पे एड अगर किसी ऐसे ब्रांड का लगा हुआ है जिसने उसको पूरा येलो कर दिया है, तो अब वो बंदा खड़ा हुआ उसको पता ही नहीं है पिंक के रेड है. मतलब इट्स जस्ट सो स्टूपिड व्हेन यू आर डिफाइनिंग योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद अ कलर थीम, देन यू कैन हैव सम रूल्स के आई डोंट नो लंदन, मैं लंदन में नहीं रहा, लेकिन आई एम श्योर कि उनके कोई रूल्स होते होंगे कि यार ये एड स्पेस है, बस पे इतना हो सकता है, यहाँ आप लिख सकते, ये थोड़ी कि आपने पूरा चिपका दिया उस पर. तो कहने की बात ये है कि वही ना कि बस वो एक पैसे बनाने की जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है. और ये क्रिकेट की भी जो आप बात कर रहे थे, it's the rights, the ad space is sold in like humongous money terms, and that's why in that particular 30 seconds break between two overs they want to put in as many as they can to earn, but वो कोई ethics formula ही नहीं है, बस it's just about blind money making, that's why it's like that. It's bizarre to say the least. But coming back to creative things, I mean, what do you think is next for, you know, जिस तरह evolution चल रही है, अब AI भी आ गया, AI का role आप कैसे, you know, what do you make of it, especially in the ad industry and music making? It can be fairly, you know, game changing. Not that I support it in that way, but अब आ गया, अब सहूलत है. Has there been any AI app for creating a song, like musically? Yeah, there's. I remember watching, मैं कोई dystopian show देखा था एक जमाने में जिसमें ये होता है, ऐप कोई बंदा ले आता है and then there is a civil suit by real musicians, and that was fiction. But now that has become it's happening real time. But यार मुझे एक बात बताओ कि जितना भी आप इसको मैकेनिकल कर दें, at the same time I still have belief that the soul matters the most. Maybe you will be able to earn more money, or maybe for a period, जैसे आजकल हर किसी को ये लगता है ना कि यार यही म्यूजिक चलेगा, हसन रहीम ही चल सकता है या अब्दुल हनान टाइप म्यूजिक ही चल सकता है. But the point is that it's for the period that we're talking about. You know, it always keeps evolving, and all of जो successful artists होते हैं वो भी evolve उसी तरीके से करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो एक फॉर्मूला बीट म्यूजिक जो है वो दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, वो फिर किसी और चीज में इवॉल्व हो जाएगी. सो इट्स नॉट नथिंग. perhaps I mean I feel जिस तरह एक हमारी ग्रुप में बात हो रही थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का, कि यू नो आज तक डिबेट चल रहा है एनालॉग डिजिटल का, वो खत्म नहीं हुआ.
तो ये भी परहैप्स ऐसी ही चीज़ है, कुछ लोग करेंगे यूज़ AI, लेकिन पीपल हु एंजॉय एनालॉग इक्विपमेंट वो अभी भी हैं, उनको ऑब्सलीट आप कह रहे हैं, वो हर एक यूज कर रहा है, वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, हर साल बिक रहे हैं प्रोडक्ट्स उनके. बट वही है कि मतलब लाइक आई सेड कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगा, बट यू कैन नॉट बीट. आई डोंट नो इफ आई शुड से इट ऑन कैमरा, बट फॉर एग्जांपल अगर आप साइकेडेलिक ड्रग्स कर रहे हैं और उसके बाद आप डिक चिक वो वाली म्यूजिक सुन रहे हैं कि जो बिल्कुल ही नॉन ह्यूमन टच से बनी हुई है, मे बी लोगों को हिट कर रही है, लेकिन इन माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दैट म्यूजिक मे बी इट वाज वर्किंग फॉर मी, बट जब गाना चला है कोई हेंड्रिक्स का और वो गिटार नोट आया पहला, तो उसने मेरी दिमाग की बत्तियां उड़ा दी थी. बिल्कुल. इसका मतलब इंसान के टच में ही पावर है, एंड यू नो दैट इज द रियलिटी दैट एवरीबडी शुड कम अप टू टर्म्स. Yeah, but I mean, when some, let's say, person with that authority, like, someone who's spending the marketing money budget and who's currently hiring XYZ producer और बीच में middleman, अगर वो क्या है यार, मैं सिर्फ एक असिस्टेंट रखूं जिसको AI प्रॉम्प्ट्स करनी आती हैं और उसको मैं थोड़े से पैसे दूं, मैं बाकी पैसे अपने लिए बचाऊं और ये सब काम निकालूं, मतलब ये ऐसी चीजें होने वाली. But did that also not happen when, I don't know, the photocopy machine come in? I don't know, मतलब it has always been there ना, जब भी कोई मशीनरी आती है तो एक ना एक तो कोई जॉब कम होती है. जिस I remember, I've heard from people that back in the day when there was no computers, they would make presentations, hand-drawn presentations, जिस तरह PowerPoint है, तो वो hand-drawn presentations होती थी, उसमें जो designs हैं या वो भी सारे hand-drawn होते थे, और उसको तो जाहिर है कि अब उसमें ज्यादा लोग लगते होंगे, अब वो एक बंदा कर सकता है, तो I don't know, like it's a never ending. Like, it is. Yeah. So let's move on to something you've recently started. You started a new job. Yeah. Tell us about that. It's a very inspirational story for musicians. But it's funny how when I'd started off doing music when I was 16, 15, and it was, मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट यही चीज़ की हुई थी ना कि दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर योर एंटायर लाइफ. इट्स गुड दैट यू आर डूइंग एंड वी सपोर्ट यू एंड वी लव यू, बट यू हैव टू डू समथिंग टू अर्न मनी, एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. ज़ाहिर है आप बड़े होंगे तो आपने पैसे तो कमाने, और म्यूजिक से उतने पैसे नहीं हो रहे होते. बट आई थिंक वॉट माई पैशन फॉर आर्ट्स, वॉट इट डिड फॉर मी, कि मैंने अपने अंदर एक डिसीजन ये लिया हुआ था कि मैं अगर पैसे भी मैंने कमाने हैं ना, तो इट शुड बी विद समथिंग that is helping me in my creative journey. And that's, like I mentioned, that मैंने अपनी advertising और ये सारी चीज़ें भी की. Funny thing happened was I had, I keep applying for like everyone on LinkedIn jobs देख ली. पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे हुए थे या हुए हुए हैं कि बाहर की jobs देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें. And so I started seeing a lot of opportunities in the music industry. Right. And that's something जो हम पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सारे हैं नहीं ना, like for example Spotify, Amazon, ये जितने भी हैं वो यहाँ पे तो उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते. And I had applied for a few jobs and then I got a call and it was from this label, Sony Music, जिसके लिए मैं अब काम कर रहा हूँ. और cutting it short, I got the job and now I'm their, basically I'm the director for artists and repertoire in Pakistan. And they are, of course, Pakistan की music में अब काम हो रहा है, global label is coming. But keeping that aside, the point is that during my interview process also, one thing that I realized was, जिसे कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में हो, वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट देने लगता है. और ये खुदा का कानून है, ये नेचर का कानून है कि अगर आप एक ही चीज़ दिल लगा के करते हैं तो मे बी उस वक्त आपको अपोजिशन हो रही होती है, लेकिन इवेंचुअली बिकॉज यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, इट जस्ट reaps some sort of benefit. And in this case, the fact that I got the job was not because of my educational experience. I mean, I have a law degree, man. Why would they give me a A&R job? Or even as per se marketing, मेरा कोई इतना experience नहीं है, 4-5 साल का, और बाकी लोगों का इतना होता है. But the fact that they saw that this guy has been there since he was 15 and वो अंडरग्राउंड सर्कल से भी जहाँ से असल म्यूज़िक निकल रहा है, और अब पाकिस्तान का म्यूज़िक आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है पूरी दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बना रहा है. दैट कंसिस्टेंसी गॉट मी द जॉब, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग. मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर कोई इस तरह से बोल रहा होता है ना कि यार हम क्या फ़ायदा करने का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई इवेंचुअल
बेनिफिट आपको अचीव करने के आपको सोनी म्यूजिक या वार्नर या यूनिवर्सल में जॉब मिल जाए. दैट्स हर किसी का अपना होता है. बट द पॉइंट इज कि जो लोग बात करते हैं ना कि यार यू कैन नॉट डू लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली वेल और मतलब आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो सोसाइटी आपसे आप कर सकते हैं. बिल्कुल. यू कैन play your cards in a way that you can do a lot of things that are acceptable और जो आपको भी वो benefits दे देगा, but at the same time you're working. Now my job is that I'm working in the music industry. It's my absolute passion. तो अगर चलो सही है कि मैं अपनी म्यूजिक पे उस जॉब में काम नहीं कर रहा, but that's मैं अपनी म्यूजिक पे थोड़ी काम करता हूँ 24 घंटे. Exactly. Yeah. So I think it's a wonderful opportunity, and you know I've been very excited about it. Abhi kaam chal raha. Of course, there are a lot of things that are in the pipeline, and but I think it's a great opportunity that our music is sort of getting that global attention. Yeah. And it has been a recent phenomenon. Yeah. In the last 2-3 years, I think the lockdown and COVID worked in our favor. बिल्कुल. Mysteriously. Yeah. और globally भी it sort of lifted the music industry again. Yeah. अब वो एक अलग बात है कि अब उसकी एक नई रूल बुक बन गई है, बट एट द सेम टाइम इट गेव अस, जब आपका कोक स्टूडियो बंद था, जब आपका जो सारे शोज बंद थे, व्हाट डिड पीपल हैव? दे जस्ट हैड देयर सेल फोन्स और उनके कान में कोई भी वो गाना जो उन्होंने कभी नहीं सुना है वो सुनना शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है. और इसकी वजह से इतने सारे लोग नोट होना शुरू हो गए, एंड आई थिंक दैट प्लस ऑल आर्टिस्ट को भी टाइम मिला, शायद जॉब पे नहीं जाना पड़ा, यू नो, तो अपना काम जो कब से चल रहा होगा उसको कंप्लीट करने का, रिलीज करने का टाइम मिला. बिल्कुल मिला आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो मुझे आई डोंट नो इफ बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट इन द लास्ट 2-3 years ग्लोबली म्यूजिक इंडस्ट्री हैज मेड अ कमबैक, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट you know you were in that lockdown state, और इतना ज़्यादा काम प्रोड्यूस भी हुआ है और लोगों ने सुना भी है, लोगों को रियलाइजेशन हुई है कि यार ये तो हमें बस दिखा दिया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने एक्सप्लोर की हैं. So I think that has really worked for an industry like us, because Pakistani music scene is not systemized. It is very independent. And I think independent music is right now the world's most famous genre, I would say. मतलब you have your Miley Cyrus और वो सारी चीज़ें चल रही हैं. हाँ, but उसके पीछे पैसा भी बहुत है. But actual अगर देखें interest कहाँ किस तरफ जा रहा है, I think that's probably the way. But you know, what can we expect? Is there anything publicly announced from Sony Music right now as to their plans? So right now, I would say with a country like Pakistan, of course, a label like Sony or a global label is going to test a lot of water. Yeah. Because वही वाली बात है ना कि I am their focal person, and you know when I present them the industry, there are no rules in our industry. There is no. If you want to make a song, is there a price format that you can give? No. You don't know what's the average price of producing a song. Because like you said, even with you in your studio with the best equipment in the world, you may be not taking the right price for your song, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इंडस्ट्री यार इतने पैसे ही नहीं कोई देगा, तो तुम अपना कहीं लोअर डाउन कर रहे हैं. बिल्कुल. वो एक्चुअल प्राइस पे चल ही नहीं रही है. बिल्कुल. तो बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं हैं. बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल डेटा इन एनालिटिक्स इज समथिंग जो there is not a lot of working in Pakistan. ये सारी जो global streaming services हैं, it's a lot of data driven thing कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा सुनी जा रही है, किस तरह का target audience क्या सुन रहा है, उस तरीके से थोड़ी इंडस्ट्री जो है वो शेप हो रही. तो पाकिस्तान में अभी बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल यार पाकिस्तान में there is no royalty का law, सही है. You and I have been part of a WhatsApp group for our lives, and I realized that is the music जो उसका incentive था वो यही था कि music society बनेगी like a union, and of course it then decides कि क्या royalty का, and that's a statutory thing. So पाकिस्तान में तो कोई भी आके बोल सकता है कि यार मैं सारा म्यूजिक ओन करने को तैयार हूँ, because there is no law about it, right? So I think I feel also very responsible, because, and this is one of the reasons why I also feel that Sony has hired me, is that I understand the music scene from the ground. So I'm not giving anyone कोई एक superficial knowledge नहीं दे रहा. तो मुझे पता है कि यार जब laws भी नहीं हैं तो किस तरीके से हम artists को और protect कर सकते हैं. How can we give them a better price? How can we give them better promotion? How can we systemize? मतलब अगर एक आर्टिस्ट है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि उसको कोई 1-2 साल के लिए बोल दे कि यार तुम बस ये गाने बनाओ. मतलब दैट्स द ड्रीम, राइट? कि कोई आपको बोले यार आपने कुछ नहीं करना, 2 साल ये गाने बनाने, ठीक है, और विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक इट्स गुड दैट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग कैन वी गो,
but the good thing that it's been banked on our talent. Right. But like, you know, as you mentioned, intellectual property का कोई वो framework नहीं है. A label like Sony surely, मतलब if they're going to invest in artists, they need to have some security के इसकी intellectual property जो है सही से protected होगी. तो शायद इनके और entry से और others like them की वजह से कुछ उस चीज पे movement हो. That's why I'm hopeful कि जब interest बढ़ेगा तो थोड़े से rules भी define होना शुरू हो जाएंगे. इंशाल्लाह. So let's hope for the best. Yeah. Sounds good. And I think maybe we can take some of the questions we have. Sure. And before that, because you mentioned Sony, and this is also part of my job and it's also my passion, that I am actively looking. For me, my job maybe कि मैं कोई एक बड़ा artist Sony पे on board कर लूँ या, you know, I get them the good numbers and everything. But what I passionately want to work is for the undiscovered music. एक जो बहुत cliched चीज भी है, but मुझे लगता है कि I'm in a position now that I can actively do something for artists. Yeah. So I am actively looking for, you know, musicians, songwriters who think that, you know, they have good songs and maybe they have been a victim to, I don't know, कि उनका नहीं promote हो पा रहा सही तरीके से music, या जो तुमने बात की कि यार किसी के पास एल्बम है वो उस तरीके से नहीं है, whatever may be the reason, किसी के पास financial means नहीं होंगे. अक्सर सिर्फ marketing की कमी होती है. Marketing की सब कुछ होता है. Yeah, you know? yeah, true. So I'm reaching out even with this platform for people to just contact me if they have good music, and I would love to, because like I said, it's part of my job. I want to be at, you know, the forefront of discovering the real good music from Pakistan. This is something that I'm doing. Yeah. Looking forward to it. Yeah. Good luck. So we have a couple of questions on the audience for you. The first one is from Syed Bakar Mehdi. He asks, how has Beatles influenced so much? How have the Beatles influenced you so much in your music, despite there being many other bands in yesteryears, and how you ended up doing indie pop? I think we all ended up doing indie because we didn't have anywhere to go to. That's what indie means. Yeah. खुद ही कर रहे हैं तो yeah. Organically indie हो गए. But I think in all my listening, I found music of the Beatles very relatable in a sense that, like I also mentioned earlier, that the compositions seemed very familiar. I don't know. With some... it was more than music for me, that I could feel, I could see through the song and a deep connection is तरह से. And also the fact that the Beatles are technically, they are the most critically acclaimed musicians in the world, but that's something that I didn't know. But one thing that I got really inspired by the Beatles was that I think they had a career, like an active career of 7 to 8 years, but they ended up doing like 10 to 12 albums. They put out a lot of work in a short time. So and this also motivated me when I was, you know, starting up with my songwriting, that I could write more. Like I should not limit myself. मुझे लगता है पाकिस्तान में आप किसी भी म्यूजिशियन से मिलें तो वो कहते हैं मेरे पास 80-90 गाने रखे हुए ब्रो, मतलब वो तो मैंने 5 गाने किए. तो मैं तो जज करता हूँ लोगों को, क्योंकि अगर आपके पास हैं गाने तो आप रख के क्या फायदा, क्योंकि म्यूजिक है ही, it's an evolving process ना. अगर मैंने 5 साल पहले एक गाना लिखा था, I was a different person back then. Yeah. How can I release? Maybe it's so damn good and maybe it has lived through the time that I can still relate to it after 5 years. But I think personally, for me, something that I had written 5 years ago, it holds lesser value for me to something that I write right now. Yeah, generally as an artist, if you're evolving, that's usually how it is. Sometimes आपके कुछ होते हैं पुराने गाने जो आप years later आप ज़्यादा relate कर पाते हैं. Exceptions होती हैं. You know. But I've always followed this mantra के जो है उस वक्त बात कर दें, not just music, जो वैसे भी दिल में बात है आपकी, वो उसी वक्त कर दें, और बाद में वो burden भी बन जाता है आपके लिए. तो that's something that I also tell anyone who asks me for any advice, that I say that even if you have problems in production and whatever financial issues, in those circumstances, what you write and what you end up producing, the quality will be judged according to your circumstances. Nobody is going to compare you with the best of the best, because you did it in an atmosphere or in a circumstance
that was limited, and that's the best thing that was going to come out. So I think that's the beauty of art in that. That's an interesting positive point of view. क्या कहते हैं? But Beatles में also, do you have a preference between like the McCartney songs or the Lennon songs, or you know, can you tell the difference? Yeah, McCartney is more like commercial. I would say Lennon was more introverted, and he was thoda sa abstract. So, but that's the great thing, and I think I find very few bands or artists in history which had like more than one powerful songwriters in the same team. Yes. Normally it's just one guy dictating it. But उनकी एल्बम्स में अगर आप सिर्फ मकार्टनी के गाने सुने, that's a different thing. Lennon, even Harrison, which is he's the most underrated Beatle. I think his songwriting was way ahead of its time. So I think I'm more of a Lennon fan. I would say I'm inspired more by him. I used to have these big क्या कहते हैं sideburns, yeah. Inspired by back in the day. Nice. अच्छा, दूसरा सवाल है from Shayan Faisal. It's devastating to know that bands are disappearing in Pakistan after Pepsi, Battle of the Bands came back, and it came back since 2002 and it returned in 17 to 19. Was looking forward to another season after Orge 1. We all know the pandemic messed up everything. And unfortunately, we never got a new season of Pepsi Battle of the Bands. Coke Studio still continued surprisingly. What's your opinion on the problems of the Pakistan music scene nowadays? पूरे वक्त हम इसी पे बात करते रहे. But you guys were on Pepsi as well. For the fact that he mentioned Pepsi. Yeah. मुझे लगता है कि it was one show that was very true in its sense that it gave an open opportunity to artists. So it was not asking for a portfolio. It was, if you know music, come and give an audition. And if you are, good enough, we'll put you on the show, and then so on and so forth. I think that वो उस तरह का फॉर्मेट की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो रही, और इतना बड़े लेवल पे हो रही थी with so much money involved. I think it was really a motivating factor. मुझे नहीं लगता कोक स्टूडियो देख के कोई इतना इंस्पायर होता होगा म्यूजिशियन, बिकॉज उसके लिए पहाड़ बहुत लंबा है ना, कि यार एक शो है, इतना बड़ा प्रोडक्शन टीम है, सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, पहले से ही कुछ करते हुए आ रहे हैं, तो मेरे ऑड्स क्या हैं जाने के. बट आई थिंक विद अ शो विद अ फॉर्मेट लाइक बैटल ऑफ द बैंड्स was that equal opportunity के I'm not taking any corporate sides के Pepsi बेहतर है या Coke बेहतर है, I'm just talking about the format. Yeah. और like for example us, we just went in and did a good audition and it just clicked and it was just live right there. मतलब पहले से कोई उस पे कुछ काम वाम नहीं हो रहा था, वो आपका कैमरा खोलना है और आपने, it was very true to the art form. तो एक बड़ा एक कल्चर बनना शुरू हो गया था. I remember even after our season in 2019, there were so many bands, so many artists who contacted us, the studio, that they wanted to prep up for the next season and everything. And there was this, एक अच्छी एक flow बन रहा था. बन रही थी. लेकिन वो of course, COVID आया, तो I think they were about to shoot their season, but it got cancelled because of the pandemic. But I don't know why they never picked it up again. Again, that's a problem with the industry. That's his lead-up question, right? What's the problem with the industry? Is that it's too invested in trends. अब जब pandemic खत्म हुआ है तो realize brands को हो गया कि यार bands तो नहीं चल रहे, तो battle of the bands क्या करेगा? अब तो सिर्फ solo artist चल रहा है, because they're too invested in, I mean, एक मुझे वो, हमेशा हम ऊपर की तरफ देखते हैं problems के लिए, but अंदर की तरफ भी थोड़े problems हैं कि मतलब I realized there were so many artists and bands and people that I've interacted with कि उनसे पूछो तो वो बताते हैं हाँ हम Battle of the Bands के लिए फॉर्म हुए थे. Exactly. और फिर टूट गया या फिर कंटिन्यू हुआ, जो भी है. But why were they waiting for a Battle of the Bands to happen? Like if they have a passion for music and if they have the lineup, तो बनाओ म्यूजिक. मतलब अब तो आप लैपटॉप में यू डोंट नीड अ प्रोड्यूसर, आप कुछ ना कुछ तो शुरू कर सकते. मे बी तुम्हारी इस बात में आंसर भी है इस चीज का कि व्हाई ब्रांड्स मे बी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, बिकॉज the last past 2 years we've seen that people have just come up with their own stuff and they've gotten popular. Because number one तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि आप फेमस हो जाए, मतलब there is no denying about it. You want to get noticed, you want to get famous. So it was an avenue. But I think now that with
सोशल मीडिया और ज़्यादा मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि the classic Pakistani problem of laziness and procrastination is also very much central in the problem in the music industry ना, कि मतलब बहुत से talented लोग हैं but वो नेगेटिव मेंटालिटी की वजह से कुछ कर नहीं रहे. कुछ करें तो शायद कुछ कहीं दरवाजे खुल जाए उनके लिए, you know. ये तो है, हरकत में बरकत जिसको कहते हैं. बिल्कुल. तो मतलब you know, I think at the end of the day if there's and anything common between all the successful musicians, right, it's usually के उन्होंने किसी का डिस्करेजमेंट या जो भी है उसको साइड पे रखा और अपना पाथ पकड़ के उसी पे चलते रहे. और वो ये चीज़ है कि एक चीज़ से फिर दूसरा आपका दरवाजा खुलता है. एंड आई थिंक वन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज आल्सो दैट वी आर टू हेल बेंट इनटू depending on a particular avenue. Coke Studio is not Pakistan's music industry. Neither is Pepsi Battle of the Bands. It's the artists. It's the public, right? So these are avenues that brands are interested. They can earn money through it. Maybe do something for the artists as well. But I think the fact remains कि आपने अपना काम करना है और फिर उसी से आपकी जो है वो सारी जर्नी. और फिर लोग, whether it's brands or anything, opportunities, they'll come after you. So you know, true. You have to kind of set that path yourself. Like I heard कि there was a Janubi Khargosh song in Marvel, right? Miss Marvel. So Janubi Khargosh was not on any show. I don't recall it, but वो consistently एक अपनी aesthetic लेकर कर रहा काम, लोग notice. And I'm sure they've earned like great bucks कि अगर Marvel ने उनका गाना उठा लिया तो वो एक जो Actually, he was here and he talked about it. मतलब उन पैसे इतने कोई life changing amount नहीं था, but in the sense कि he got to finally get some better gear and start open up officially his studio. नहीं, मैं पॉइंट पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं हम इसलिए नहीं कर रहे कि पैसे नहीं कमा पा रहे. बट दैट्स द रॉन्ग अप्रोच ना. आपके सामने इतने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कमा लिए पैसे. तो अगर पैसे तो वो चीज़ है जो आप कमा ही लेते हैं. आप कमा लोगे अगर आप कोई बिजनेस करके भी कमा सकते हैं. पॉइंट ये है कि आप म्यूजिक किस लिए कर रहे हो. मुझे लगता है अपने काम से ऑनेस्ट हो जाए. वो पैसे का जो है ना उसमें बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट व्हाट दे कॉल इन बिजनेस टर्म्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दे आर नॉट सीइंग इट बट देन यू आर टू मच सीइंग इट सुपरफिशियली. तो मतलब वही है ना, return on investment is something you can look at. But I think I would like to since he also asked what is the problem, पैसे से ये मुझे बात याद आ रही है कि पैसा problem भी है. Why our industry never sort of takes off, because when you use the word industry, ये बड़ा important है. मैं अपनी कभी ग्लोबल मीटिंग्स में बैठता हूँ, मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान म्यूजिक बिकॉज इंडस्ट्री अगर आप इसको गूगल भी कर लें, आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट डेफिनेशन. इट्स अ सिस्टम वेयर which generates jobs. जहाँ पे ये सारी you know it's a financial model. तो पाकिस्तान में तो वो नहीं है चीज़. सही है. तो the point is that for an industry to survive there needs to be a capital investment. There needs to be money. If there is a young artist, he needs to produce a song at a good studio. He needs money for that. सही है. So where are all of those avenues that are willing to invest? पाकिस्तान में मसला है कि कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. हालांकि ये तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि पैसे तो बहुत हैं. बहुत पैसे. लाइक वी मेंशन कि एड इंडस्ट्री तो खड़ी हुई है. मतलब पैसा है, क्रिएटिव में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं. सिनेमाज भी हैं, मॉल्स भी हैं, आई डोंट नो, क्रिकेट स्टेडियम्स एंड ऑल दैट. देयर इज सो मच मनी पोरिंग इट, बट द इन्वेस्टर और हुएवर द रिच पीपल दे आर नॉट कन्विंस्ड येट कि अगर इसमें मैं पैसे डालूंगा तो मुझे कोई रिटर्न मिल जाएगा. उनको कोई समझाने वाला नहीं है. और मे बी इफ वी बिकम सम डे हम उनकी पोजीशन में आए, सो मे बी वील अंडरस्टैंड इट बेटर. बट दैट्स if you were to ask me what's the number one issue plaguing the industry is that there is not enough money for young artists to sort of get into the system. बहुत सारे लोग जो है ना वो पहली ट्राई तक ही नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज उनके पास बिल्कुल भी वो नहीं है मीन्स करने के. तो आई थिंक जितना ज़्यादा यू नो कैपिटल इन्वेस्ट होगा, यू नो अगर यू नो हमारी भी कंपनीज इस तरीके से बनेंगी जो कि म्यूजिक में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, सो आई थिंक it'll be better. Inshallah. But pleasure having you on. And, same here. Thank you so much for having me. I had a great time, and if you haven't heard E Sharp, check out the music. And Funkaarpur, इनका जो production house है उनसे भी Pakkar Dakkar is the band that they've produced and several other things that they've done. So check them out and drop your comments below, and we'll see you next time inshallah.